Hello and welcome you all. Dear students, this topic is quick revision of probability and random variables. That is quick revision of unit number 6 for the subject signals and systems. From the theory point of view, you can expect the question like this: define probability and list out its properties, or define probability, then second define conditional probability, and third define joint probability. So let us discuss this part. Everyone is aware what is the probability and all that. So definition is probability of any event x. कोई भी एक इवेंट है, जैसे हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, सो इवेंट इज लाइक गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, that is an event. So that event is denoted by x. So probability of any event x is the ratio of number of possible favorable outcomes to the total number of outcomes of an experiment. Then this is the list of properties of probability. A certain event has probability 1. देखो certain event को बोलते हैं sure event, मतलब हमें पता है यही आउटपुट आएगा. So that sure event or certain event has maximum probability, that is 1. ये याद रखना है. Minimum probability is 0, maximum probability is 1. So for certain or sure event, P of x, that is maximum probability, is equals to 1. Second part, probability of any event lies between 0 to 1, including both 0 and 1. So range of probability is between 0 to 1. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और the value of probability can between 0 to 1. Third part, for mutually exclusive events. अब इस वर्ड का मतलब क्या है? Mutually exclusive events मतलब two events are independent of each other. Both cannot occur simultaneously. जैसे if you are tossing a coin, तो आप लोगों को either you will get head or you will get tail. Both the things cannot occur simultaneously. So such events are mutually exclusive events, x and y. The probability of their union is P of x plus y is probability of x plus probability of y. And for mutually non-exclusive events, जैसे मैंने बताया non-exclusive है, tossing a coin, rolling a die. So for mutually non-exclusive events, probability of their union is given by P of x plus y is probability of x plus probability of y minus probability of x y, where probability of x into y is probability of joint occurrence of x and y. Then last, probability of x bar. X bar is also called conjugate of or complement of x. So P of x bar is equals to 1 minus probability of x. So this is the list of properties of probability. Now conditional probability, ये define कैसे करेंगे? दो events है x और y. So probability of getting y given x, मतलब अगर x available है तो y का probability क्या है? That is called conditional probability. How will you define it? Probability of getting y if x is known is called conditional probability, denoted by px given y. ये ऐसे रीड करते हैं, py given x, sorry, y given x. अगर मैं ऐसे नोटेशन लिखूंगा, probability of x, one line, and y, it is read like this: probability of x given y, मतलब y available है तभी x का probability आप calculate कर सकते हो. So that is conditional probability. Related to this, there is one important rule which is called Bayes rule, which is probability y given x is probability of xy upon probability of x, where probability of x into y is probability of joint occurrence of x and y. Then joint probability, same जैसे यहाँ पे लिखा है, probability of x y is called joint probability, that is probability of joint occurrence of x and y. It is product of probabilities of individual events. So this is about definition and properties of probability. देखो as such probability के numerical simple होते हैं. So to get an idea, let us solve one numerical. A box contains 5 yellow, 7 pink and 4 green balls. A ball is drawn at a random. Find the probability that first part it is pink, second not green, third green or yellow. अब ये simple numerical है. First we will calculate total number of balls. So it is addition of all the things, that is 5 plus 7 plus 4, that is 16. So total number of balls is equals to 16. First part, it is clearly mentioned ball is drawn at random. So first part, calculate probability that the ball is pink. How many total pink balls are there? That is 7. So probability of pink ball, I will write probability of P stands for pink ball. So it is simple 7 by 16, because total
available pink balls are 7 and total number of balls are 16. So 7 out of 16, that is probability of pink balls, drawing a pink ball. Second part is not green. Not green means it can be yellow or pink. So I will write it like this: probability of not green, which is equals to probability of getting or drawing yellow ball and probability of getting pink ball. Probability of drawing yellow ball, there are 5 yellow balls, so it is 5 upon 16 plus probability of drawing pink ball, which we have already calculated, 7 upon 16, it is 12 upon 16. You can well do it like this: probability of not green is 1 minus probability of drawing a green ball. So it will be 1 minus 4 by 16, one and the same thing. Third part, probability of getting green or yellow ball. Again, it's simple: probability of green and yellow. So it is probability of green plus probability of yellow. Probability of drawing a green ball is 4 by 16 plus probability of drawing a yellow ball is 5 by 16. So it is 9 by 16. Likewise, you can solve the numericals related to probability. Next part is random variables. Let us discuss one question. Suppose the question is, define the term random variable and what are its types. अब देखो, जैसे as the name indicates, it is random in nature. For example, if I am talking about an experiment of tossing a coin, there are two possible outcomes, either head or tail. Let us say I will be using notation X and I will assign number 1, and we will assume that number 1 represents head. Similarly, number 0 represents tail. So when X takes value 1, we will say the output is head. When X takes value 0, we will say output is tail. Now I have used notation X, someone can use notation A, B, C and so on. So it is called random variable. How to define it? A function that takes any value from the sample space. Sample space means collection of all possible outputs. For example, in case of tossing a coin, sample space will be head, tail. That is, it will be combination of head and tail. So it defines a rule by which a real number can be assigned to outcome of an experiment. Outcome मतलब output. जैसे देखो, एक रूल हमने तैयार किया, सपोज एक्स नोटेशन यूज किया है और हम लोग एज्यूम करेंगे कि नंबर 1 असाइन करेंगे इफ आउटपुट इज हेड एंड नंबर 0 असाइन करेंगे इफ आउटपुट इज टेल. सो दिस इज कॉल्ड, एक्स इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. There are two types. One is continuous random variable, another is discrete random variable. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल व्हेन x क्या है, एक नोटेशन असाइन किया है हमने. नोटेशन मतलब अलग नोटेशंस भी हो सकते हैं, लाइक ए बी सी. सो इफ व्हेन x टेक्स एनी वैल्यू फ्रॉम द होल ऑब्जर्वेशन इंटरवल, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. एंड व्हेन x टेक्स only finite number of values in finite time interval, then it is called discrete random variable. Next, an important part, definition of CDF and its properties. देखो अपने सिलेबस में दो पार्ट्स है. वन इज CDF cumulative distribution function, another is PDF probability density function or distribution function. Presently I am talking about CDF. Definition और properties important है दोनों के. CDF, as the name indicates, it is cumulative distribution function. Cumulative, the name itself indicates, it goes on adding the things. इसका definition है, it is the probability that capital X एक notation है, will have values less than or equals to small x. इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, मतलब एग्जाम में आप लोगों को अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो उस पर्पज से मैं बोल रहा हूँ. इफ यू कंसिडर वन एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग अ वाटर एंड लेट अस से capital X indicates the present temperature of a water. It keeps on boiling. So if we assume small x is equals to 100 degree, if we want to calculate कि probability क्या होगा कि capital X का वैल्यू, मतलब हमने गीजर ऑन किया है and we are taking the readings of present temperature. So probability of X, मतलब temperature, water temperature which is less than or equals to 100 degree, ये जो इफेक्ट है that is called CDF, cumulative distribution function. इसको cumulative क्यों बोलेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है. जब
हमने गीजर ऑन किया, दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर वाज इक्वल टू द रूम टेम्परेचर। उसके बाद 1 मिनट में लेट अस से रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री, 1 मिनट के बाद गीजर ऑन किया है तो 1 मिनट के बाद लेट अस से इट इज इंक्रीज बाय 3 डिग्रीज, इट बिकम्स 28 डिग्रीज। उसके बाद और 1 मिनट के बाद इट हैज अगेन इंक्रीज्ड बाय 3, सो इट बिकम्स 31 डिग्री। ये क्यूमुलेटिव एक्शन है, सो इट इज कॉल्ड CDF। इसका नोटेशन है कैपिटल F, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है नोटेशन। दिस इज कैपिटल F बेस कैपिटल X ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल x। अब प्रॉपर्टीज देखो, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग भी लिखना है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द मीनिंग। सो फर्स्ट इज fx of x is between 0 to 1, means 0 less than equals to fx of x is less than or equals to 1. How to write it? Value of CDF is always between 0 to 1. Second, fx of infinity is equals to 1. इसका क्या मतलब है? देखो नोटेशन है fx of small x. When I write fx of infinity, इसका मतलब है small x का वैल्यू infinity होगा. So according to this defining equation, I will get probability of x less than or equals to infinity. कोई भी वैल्यू, कोई भी probability is always less than or equals to infinity. So any value of x is always less than or equals to infinity. So it is the maximum probability, and we know that maximum probability is always 1. So fx of infinity is equals to 1. Third, fx of minus infinity, जैसे यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी लिखता हूँ तो एनी वैल्यू कैनॉट बी लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. सो fx of minus infinity is 0. Then if you consider two more notations, two more values of small x1 and small x2, then CDF corresponding to small x1 is less than or equals to CDF corresponding to small x2. Dear students, मैंने CDF में limited variations है न्यूमेरिकल्स के, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया. I have already solved all the types of variations as far as this CDF is concerned. So please do watch that video, क्योंकि इतना सिर्फ sufficient नहीं है, आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे. I have already solved the numericals, so I am not repeating it. Next part is PDF, that is probability distribution function. नोटेशन पे ध्यान दे कर लो. ये स्मॉल f है, CDF में हम लोग कैपिटल F यूज करते हैं. दिस इज स्मॉल f बेस कैपिटल X ऑफ x. So small f means PDF. Definition बहुत सिंपल है. This is the definition of PDF. It is derivative of CDF. Therefore, small fx of x is equals to d by dx of CDF, that is capital Fx of x. Properties. CDF is integration of PDF. बहुत सिंपल है, जैसे हमने लिखा है PDF is derivative of CDF, तो उल्टा CDF is integration of PDF. Second property, for all values of x, fx of x, that is PDF, या small f है, PDF is greater than or equals to 1. आप ये ऐसा लिख सकते हो in words, value of fx of x is always positive because it is basically derivative of CDF, and CDF is increasing function. किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. दैट्स व्हाई fx of x, that is PDF, is greater than or equals to 0, that means always positive. Third, area under PDF curve is 1. We know that area under curve is basically integration. So integration from minus infinity to plus infinity, ये PDF है, इसलिए small f fx of x dx is equals to 1. And probability to calculate value between x1 to x2 is integration x1 to x2 fx of x dx. Again, this is small x, small f, so it is PDF. देखो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो तैयार किया है पीडीएफ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. मैंने हर एक टाइप के वेरिएशंस कवर किए हैं बिकॉज दिस न्यूमेरिकल्स आर प्रीटी सिंपल. ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए. ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखोगे, वो भी बहुत सिंपल है, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल. स्टिल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किए वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है. लेट अस सॉल्व वन डिफरेंट न्यूमेरिकल व्हिच आई हैवंट कवर्ड इट अर्लियर रिलेटेड टू डिस्क्रीट वेरिएबल. Consider a numerical given PDF for different values of x as follows. ये values दिए, x is equals to 1 पे PDF है 0.2, 2 पे PDF है 0.1, 3 पे 0.3, 4 पे 0.3, 5 पे 0.1. This is 0.1. Draw PDF and obtain corresponding CDF. Also plot the CDF. पहला पार्ट, इसका डायग्राम PDF का मतलब प्रोबेबिलिटी का ड्रॉ कैसे करना है. x के वैल्यूज देखो, x is 1, 2, 3, 4, 5. तो इस एक्सिस पे स्मॉल x प्लॉट करेंगे, यहाँ
सपोज x इज इक्वल टू 0 मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5, सिंपल है। जो वैल्यू है, जैसे देखो x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी है 0.2, पीडीएफ 0.2, तो यहाँ पे 0.2 का लाइन ड्रॉ करेंगे। देन दिस इज ग्राफ ऑफ पीडीएफ वर्सेस स्मॉल x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 0.1, 2 पे 0.1, ये 0.1 का लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 पे वैल्यू है 0.3, सो 3 पे 0.3। at 4 value is 0.3, at 4 again 0.3, and at 5 value is 0.1, so at 5 value is 0.1. This is one part. Now for the next part, it is also asked, this we have drawn the diagram for PDF, it is also asked to calculate corresponding CDF and plot the CDF. अब ये calculation करने के लिए एक table बनाएंगे हम लोग, so that calculations will become easy. पहला रो है x के लिए, x के क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। फिर गिवन वैल्यू ऑफ पीडीएफ विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, विल राइट इट एज इट इज 0.2, देन 0.1, 0.3, 3 पे 0.3 है, 4 पे 0.3 है, 5 पे 0.1 है। अब नेक्स्ट कॉलम ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव जस्ट रिटन द गिवन वैल्यूज। नेक्स्ट कॉलम, पहले मैं टेबल कंप्लीट करता हूँ ये मैं। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ CDF, that is cumulative distribution function. We know its notation is capital Fx of x. अब देखो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, ये क्यूमुलेटिव एक्शन है, मतलब इट कीप्स ऑन एडिंग विद द प्रीवियस वैल्यू। जैसे 1 पे ये x इज इक्वल टू 1 पे जो ओरिजिनल वैल्यू है एज इट इज रहेगा, 2 पे वैल्यू है 0.1, प्रीवियस वैल्यू 2 पे वैल्यू 0.1 है, प्रीवियस वैल्यू 0.2 था, इसके साथ ऐड होके ये 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 0.3, फिर से प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करना है तो 0.6 हो जाएगा। फिर ये 0.3 है, ये 0.6 के साथ ऐड करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। फिर 0.9 और 0.1 ये वैल्यू 1 आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CDF मस्ट बी 1, मतलब फाइनल वैल्यू 1 आना चाहिए, देन एंड देन ओनली योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। बहुत सिंपल टेक्निक है, सिर्फ प्रीवियस वैल्यूज के साथ ऐड करते जाना। ये पहला वैल्यू एज इट इज लिखा, दूसरा 0.1 है, पहले वैल्यू के साथ ऐड किया 0.3 आया, फिर ये 0.3 इसके साथ ऐड किया 0.6 का है, लाइकवाइज। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सो इट इज ग्राफ ऑफ x वर्सेस कैपिटल Fx ऑफ x। अब देखो ये स्केल मार्क करेंगे 0 1 2 3 4 5। एक्चुअली वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से नहीं दिया है। सो जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल, मतलब आपका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये स्केल मैं 1 एज्यूम करता हूँ। सो दिस इज 1 2 3 4 5। एक्चुअली 0 से दिए होते तो यहाँ 0 आ जाता। ऑलराइट, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब देखो पहला वैल्यू है 0.2, ये 0.2 का एक लेवल ड्रॉ करेंगे, दिस इज 0.2। डू रिमेंबर ये जो ग्राफ है CDF का, ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा। ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ, इट वाज डिस्क्रीट ग्राफ, इट इज कंटिन्यूस हमेशा। तो ये जो 0.2 पहला CDF का वैल्यू है, ये आप लोगों को 1 to 2 रेंज में लेना है, मतलब ये वाला ऐसे। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना है 0.3, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.2 देन 0.3, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 0.6। ये हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग ही आना चाहिए, ये 0.6 जैसे ये ऐसे वैल्यू से। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 0.9, ये 0.9 यहाँ तक, ये 0.9, उसके बाद वैल्यू 1 आएगा कंटिन्यूसली टिल इंफिनिटी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग CDF। द नेक्स्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। मीन वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज वैल्यू। नोटेशन इज mx और e ऑफ x। e मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x फॉर्मूला है -∞ to +∞ x इंटू fx ऑफ x dx। डू रिमेंबर ये स्मॉल f है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ PDF। हर एक प्रॉब्लम, हर एक फॉर्मूला में PDF लगता है, यहाँ पे CDF का वैल्यू नहीं लगता है। देन मीन स्क्वायर वैल्यू s, यहाँ x है, इसके बदले में सिर्फ x स्क्वायर आएगा। देन वेरिएंस,
मतलब this value, answer of second part minus answer of first part, that is e of x square minus square of answer of first part, मतलब mx square, e of x square minus mx square. Standard deviation, it is simple square root of variance, that is square root of sigma square. Just to get an idea, we'll discuss one numerical. Suppose a question दिया है, the PDF of random variable is 1 by a, where mod x is less than or equals to a and 0 otherwise. कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड वेरिएंस. अब देखो ये प्रॉब्लम मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है. जो पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसके कंपैरेटिवली दिस इज समवॉट डिफरेंट. बेसिक्स अगर आप बेसिक्स में मिस्टेक करोगे तो एंटायर प्रॉब्लम विल बी लॉन्ग. यहाँ पे क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ए. अब फॉर्मूला में लिमिट्स देखो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है. इस केस में लिमिट्स क्या लेंगे, माइनस ए टू प्लस ए. इट विल नॉट बी जीरो टू ए. ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं. मॉड जब भी आता है तो माइनस और प्लस दोनों रीडिंग्स लेना है. सो माइनस ए टू प्लस ए, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. मतलब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. सो आई हैव जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. इट्स प्रीटी सिंपल. x इंटू 1 बाई ए बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, आंसर विल बी 0. सेम वे e ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर, सिर्फ लिमिट्स का ध्यान देना है. माइनस ए टू प्लस ए क्योंकि यहाँ मॉड x है. सो आंसर विल बी 2a स्क्वायर बाई 3. डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है. देन सिग्मा वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर इज 2a स्क्वायर बाई 3. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर बाई 3. सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ये थोड़ा अलग था, लिमिट्स में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया. अदरवाइज हर एक टाइप के स्टैटिस्टिकल एवरेज के न्यूमेरिकल्स मैंने कवर किए. दैट वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज प्रोबेबिलिटी मॉडल. ये दो डायग्राम्स आपको याद रखने, उसका भी सेपरेट वीडियो बनाया. सो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम इन दिस लेक्चर, क्योंकि दो ही डायग्राम और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है. सो दैट्स इट फॉर यूनिट नंबर 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching this series of signals and systems, and all the very best for everyone for your exam. Thank you very much.